हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी आज के सेशन में देखने वाले हैं ईडीए के बारे में। ईडीएम इज क्या होता है? ईडीएम इज रेफर्ड टू एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. इट इज अ मेथड which can be used for studying and exploring records that appear in their prominent traits, discover patterns, locate outliers and identify relationship between variables. जो हमारा ईडी है बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसमें जो पैटर्न्स है उसको डिस्कवर करने के लिए, आउटलेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो दो वेरिएबल्स में जो भी रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ईडीए का यूज करते हैं. द प्रोमिनेंट गोल ऑफ ईडीए में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग मीन्स ईडीए इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग the information from errors, lacking values, and inconsistencies. It includes techniques like record imputation, managing misses statistics, and figuring out the getting rid of outliers. यानी हमारे पास जो भी डेटा होता है, अनअंडरस्टैंडेबल डेटा है, उसको क्लीन करने के, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट करने का, न्यू फॉर्मूलाज मतलब से नवीन टेबल कॉलम ऐड करने के टेबल में, इसके लिए डेटा क्लीनिंग एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक utilize precise records to recognize the important tendency, variability, and distribution of variables. Measures like mean, mode, median, preferred deviation, range, and percentiles are usually used in descriptive statistics. Data visualization. ED employs visual techniques to represent the statistic ग्राफिकली. जो भी हमारा डेटा है उसको ग्राफिकल व्यू में यूजर इसको विजुअलाइज करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन हम ईडीएम ही यूज करते हैं. इसमें जैसे कि बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, लाइन ग्राफ, हिटमैप, बार चार्ट, असिस्ट आइडेंटिफाई स्टाइल्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन द फैक्ट. फीचर इंजीनियरिंग. फीचर इंजीनियरिंग हम यूज करते हैं. ईडीए अलाउज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स एंड देयर adjustment to create new functions or derive meaningful insight. Feature engineering can be content means like scaling, normalization, meaning, encoding expressions, variables, and creating interplay and deliver variables. EDA correlation and relationship. EDA allows to discover relationship and dependence between variables. Techniques such as correlation analysis, scatter plot, fast tabulation, and offer insight into the power and direction to relationship between variables. जो भी हमारे EDA इसको जो भी हमारे दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है इसको चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है. Data segmentation. Data segmentation means EDA can contain the dividing the information to significant segment. इसमें हम डेटा को क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो हमारा डिवाइडिंग के पार्ट होता है उसको कहा जाता है डेटा सेगमेंटेशन. hypothesis generation. EDA aids in generating hypotheses or strays question based rooted on the primary exploration of the data. It facilitates from inspiration in addition evaluation model building. Data quality assessment. EDA permits for accessing the nice and reliability of the information. It involves checking for record integrity, consistency, and accuracy to make certain information is suitable for the analysis. Types of EDA. Basically EDA के types हम देखते हैं. EDA के basically 7 types है. Univariate analysis, bivariate analysis, multivariate analysis, time series analysis, missing data analysis, outliers, and data visualization. One by one देखते हैं. Univariate analysis. Univariate analysis, this sort of evaluation makes specially for analyzing character variable inside the records. जो भी हमारे रिकॉर्ड में कैरेक्टर वेरिएबल्स है उसको एनालाइज करने के लिए यूनिवेरिएंट एनालिसिस का यूज करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि समराइजिंग द विजुअलाइजिंग. जो भी हमारे विजुअलाइजेशन को समराइज करते हैं न्यूमेरिक टेबल्स एट द टाइम टू अंडरस्टैंड इट बार डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेवेंट टेंडेंसी, अनफोल्ड एंड डिफरेंट एप्लीकेबल रिकॉर्ड्स. टेक्निक लाइक हिस्टोग्राम, field plots, bar charts, and precise information are generally used in univariate analysis. Bivariant analysis. Bivariant analysis हम यूज करते हैं एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स. दो वेरिएबल में कौन सा कनेक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं बाइवेरिएंट एनालिसिस. इट इनेबल्स
ये हमें क्या करता है एसोसिएशन को फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन को चेक करने के लिए, तो वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड है, इसके लिए हम बाइवेरिएंट एनालिसिस का यूज करते हैं। Scatter plot, line plot, correlation matrix, and move tabulation are generally used evaluation strategies in bivariant analysis. Multivariant analysis extend bivariant evaluation and compose greater than variable. In application to obtain complex interaction and dependencies among more than one variable is a requisite. Technique exclusively of heat maps, parallel coordination, except analysis, PCA are used for the multivariate analysis. Time series analysis. In time series analysis, this type of analysis mainly applied on statistics data temporal component. Time collection evaluation in test inspecting and modeling state sensibility inside the static through the technique like line plot, autocorrelation analysis, transferring average and autoglycid integrated moving average ratios are generally used in time series analysis. Missing data analysis. Missing data analysis. In missing data analysis, missing information is not usually issued in dataset and they may be impact reliability and validity of the evaluation. जो भी हमारा missing data हो इतना impact नहीं करता हमारी data इतना अनयूजुअल होता है, बट ये क्या करते हैं कि जो हमारा रिलेबिलिटी एंड वैलिडेशन करते हैं एडल्ट मॉडल का उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिसर्च जो डेटा है मिसिंग डेटा को मैनेज करने के लिए मैनेज करते हैं। लाइक जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं नल वैल्यू से फिल करते हैं या फिर उसको ड्रॉप करने का काम करते हैं। आउटलेयर एनालिसिस आउटलेयर एनालिसिस आउटलेयर स्टैटिस्टिक फैक्टर एक स्टैटिस्टिक फैक्टर है जिसका यूज हम क्या करते हैं स्कैटरली डेरिवेट फ्रॉम जनरल सैंपल ऑफ द फैक्ट्स आउटलेयर एनालिसिस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ आउटलेयर आउटलेयर एनालिसिस का यूज करके हम नॉलेज का प्रेजेंस आउटलेयर का यूज करते हैं their adaptability results and their impact at the one analysis technique along with the box plot scatter plot and ranking and clustering algorithms are used to outlier the evaluation. डेटा विजुअलाइजेशन डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं हम ईडीए में जो भी हमारा डेटा होता है स्टैटिस्टिकल डेटा को ग्राफिकल व्यू में यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं इसमें हम वो टेक्निक यूज करते हैं लाइक हिस्टोग्राम स्कैटर प्लॉट लाइन प्लॉट हिट मैप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स इसका यूज कर हम डेटा को विजुअलाइज करने का काम करते हैं। ये था हमारा ईडीए क्या है इसको ईडीए को इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारे हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आज के लिए बस